Friends, today I am going to teach you the how can you say that a chemical reaction took place. तुम्हें reaction के बारे में मालूम है. What is the physical changes? What is the chemical changes? And what are the chemical reactions? But how can you say that chemical reaction took place? Let me go ahead with that. How can you say that a chemical reaction took place? Now, think of it. This is my question, how a chemical reaction took place. इसी को दूसरे वे में भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे. What happens when a chemical reaction occurs? What happens when chemical reaction occurs? ये कंडीशन है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है. चलिए सबसे पहला पॉइंट, चेंज इन फिजिकल स्टेट, उसकी अवस्थाएं बदल जाती है. Now H2 गैस है प्लस O2 गैस है, H2O लिक्विड बनेगा. ये 2 कर दीजिए, H2O गैस चेंजेस into liquid. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस अपॉन रिएक्शन गिव्स वाटर. दूसरा, अगर इसमें एक फिजिकल चेंजेस था तो दो गैस था वो लिक्विड बन चुका. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपन कॉम्बिनेशन गिव्स लिक्विड. चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी कर सकते हो, दोनों हो सकता है. C प्लस O2 O2 गैस CO2 कंबसन, CO2 बना प्लस हीट एनर्जी इज गिवन आउट. जरा समझने की कोशिश करो दोनों रिएक्शन पर, ध्यान दो. हमने बताया चेंज इन द टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इट कैन बी इवोल्यूशन ऑफ गैस, थर्ड नंबर इवोल्यूशन ऑफ गैस. वो कैसे होता है जरा वो भी देखो. इवोल्यूशन ऑफ गैस, द केमिकल रिएक्शन will takes place in that vapor will form, gas will released. Here also evolution Zn plus HCl, ZnCl2
plus H2, gas is given out. Zinc and hydrochloric acid will give you ZnCl2 and H2. Evolution of gas and fourth reaction. What can you do after evolution of gas? Formation of or change in the order of smell. Change in the order of smell. अब आप इसको देखो, चेंज इन द ऑर्डर, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, व्हाट आर द थिंग्स हैपेंस? चेंज इन देयर फिजिकल स्टेट, चेंज इन द टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन द ऑर्डर. उसका स्मेल भी बदलता है. चेंज इन ऑर्डर. N2 plus H2 gives 2NH3. The smell of ammonia gas. Change in the order भी आपको मैंने बता दिया. Now thing is that which way you can proceed. Precipitation reaction is also there, and the last precipitate formation you can see. Precipitate formation. Precipitate formation. What is the precipitate formation? Can you tell me? Think of. Precipitate formation. The chemical reaction in which the precipitate is given out, that is called precipitate formation. The chemical reaction in which the precipitate formation took place you remember is this much, the chemical reaction in which the precipitate formation took places. We have given you, of course that much is not in your syllabuses, little more they have given it, avoid it, we will do later on. Precipitate formation took places, that is called precipitation reaction. Apart from that, exothermic reaction and endothermic reactions. Exothermic reaction are those chemical reactions. Exothermic reaction. Exothermic reaction वो कौन सा रिएक्शन होता है? दोज रिएक्शन in which heat energy is given out like CaO plus H2O. If CaOH whole 2 plus H2, 2H2
प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यही है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये है, हमने जितना बताया है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर करना। अब जरा ध्यान से सुनो, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन भी लिख लीजिए। इंडो, ENDO, इंडोथर्मिक reaction. Those chemical reaction in which heat is absorbed. Those chemical reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. For example, N2 plus O2 gives 2N. Heat is absorbed. इसमें heat लगता है, हीट करोगे तब ये रिएक्शन हो इंडोथर्मिक। अगर हीट नहीं दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो those chemical reaction in which heat energy is absorbed is called endothermic reaction, and the chemical reaction in which heat energy is given out are known as exothermic reaction. चलिए हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। Number 1 question. What is exothermic reaction? दूसरा, what is define the reaction which require heat? How can you say that a chemical reaction takes place? How can you say that a chemical reaction took place? How can you say that a chemical reaction took place? ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है टुमारोज क्लास। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।